दोस्तों हक मौजूद अस्सलाम वालेकुम सबिन दोस्तन के मैं वाशिंगटन डीसी से मुश्ताक राजपर और मेरे साथ टोरंटो से हैं हमारे दोस्त शहजाद अहमद और सेंट लुइस से अदा सुहेल अंसारी। आज हमारी जो गेस्ट हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि डॉन की असिस्टेंट एडिटर और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं नजीहा सैयद अली, उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। उनकी मोस्टली जो स्टोरीज छपी हैं डॉन में पिछले कई सालों से आ रही हैं, बहरिया टाउन, DHA और जो कराची के अंदर लैंड का जो इशू है उस पर। नज़िया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। और दोस्तों, जिस तरह हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज हैं उन पे एक इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए, खास जितने भी जो लोगों से जिन इश्यूज का ताल्लुक है, तो ये सिलसिला जो हमारा फ्रेंड्स ऑफ सोसाइटी का जो है वो इसी था कि हम इश्यूज पे बात करें और जो लोग इन इश्यूज को जानते हैं उनसे गुफ्तगू करें, ताकि एक हमें इन्फॉर्म डिबेट कर सकें। डिस्ट्रॉशन बहुत होती है यहाँ पे भी और पाकिस्तान के अंदर भी इश्यूज पे, तो रियल पिक्चर नहीं आती। हम में से काफ़ी लोगों ने नज़िया की जो स्टोरीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है वो डॉन में पढ़ी है और आई थिंक उसका इम्पैक्ट जो है वो तो सबने देखा है कि बहुत कम जर्नलिज्म ऐसा होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर सोमोटो ले और वो उसको जो है वो फ्रीक्वेंटली उसका रेफरेंस हो। ये बड़ी बात है आई थिंक। और नज़िया, आपसे पहले हम आपस में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, और स्पेशली जो बिग पावर्स हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंशियल वेल कनेक्टेड लोग हैं, जब वो जिन चीज़ों पे शामिल होते हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो हाउ डिड यू टेक दैट अप? आई थिंक एक तो मुझे पहले से आई वाज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। मैंने न्यूजीलैंड में शुरू किया काम एंड वहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि जिस तरह के लॉन्ग फॉर्म स्टोरी जिसमें आपके पास स्पेस होती है कि और टाइम होता है कि आप जाके थोड़ा डिग करें और जो सामने जो इशू पुलिस वालों से मिली हूँ। So I think one of the earliest stories जो sectarian violence पे थे, I think mine were probably at least among the first few stories that were written on this. तो वो जो शौक हर वक्त था एंड जब मैंने डॉन ज्वाइन किया, मेरे एडिटर जफर अब्बास ने मेरे ख्याल से रिकग्नाइज किया कि मेरी स्ट्रेंथ इसी में है। उन्होंने ये नहीं पूछ किया कि भाई तुमने स्टोरी एक हफ्ते में नहीं दी, हालांकि मेरा एक्चुअल जॉब वहाँ पे एडिटोरियल राइटिंग है। तो कभी समटाइम्स ही आस्क हाउ इज इट कमिंग अराउंड, बट वो नहीं था कि भाई एक हफ्ता हो गया तुम नहीं की। समटाइम्स आई टेक मंथ्स ओवर स्टोरीज। So that's how, and I think it's very important to have the support of your organization. That is, I mean, आप देखें बहरिया की स्टोरी कौन कर रहा था? Nobody was doing the story. That was कोई भी जर्नलिस्ट के लिए ना वो एक एलिफेंट इन द रूम थी, क्योंकि कोई भी आप स्टोरी आप बहरिया पे नहीं करें, इट वाज अ ह्यूज स्टोरी and nobody was doing it. And I think that it is very important. जी हाँ, आई थिंक थोड़ा बहुत कनेक्शन का इशू हुआ, बीच में आपकी जो है आवाज़ गायब हो गई, लेकिन ये होता रहेगा। आई थिंक बातचीत करनी चाहिए क्योंकि हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो अच्छा, इसी से एक सवाल के जो स्टोरी का आइडिया है वो जो न्यूज़ डेस्क है वो पिच करती है, एडिटर साहब पिच करते हैं, या जो रिपोर्टर है वहां से आता है? The editor might tell you कि अच्छा इसको handle it like this या कुछ, and that happens. Discussions होते हैं हमारे काफी detailed, or and it comes both like Bahria actually, I suggested along with my colleague Fahim, we both suggested, and initially वो था थोड़ा सा कि भाई is there a story or not, so we dug around a little, we said yes, there's this massive story, so then he was fully on board. So it is both ways.
आपकी स्टोरीज क्योंकि लोगों को, वो लोग जो मुलवस होते हैं, शामिल होते हैं, वो क्योंकि जो मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, बल्कि जो करप्शन के चीज़ें उसमें जो पहलू है, तो वो एक्सपोज होते हैं। और फिर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो भी हमने देखा है आपकी स्टोरीज में, वो आपको तकरीबन नहीं मिला। यानी जब आपने जामशोरों की स्टोरी की है, वहाँ पे भी मलिक असद और जो लोग थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिला आपको, और यहाँ इवन पुलिस और सरकारी। जी जी। Actually, Malik Asad ka mila. I was a colleague of mine, Mohammad Hussain, who's our correspondent in Hyderabad. He got his wo because he ने कहा कि he said कि नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल injustice नहीं होती है with the farmers. हम we do our utmost to be just and understanding about their needs. तो मैंने ली थी. I did take it. But I think the funniest thing actually was I did a story on Balochistan pe missing people. This was quite a few years ago, and I think that was the funniest because I called up the FC जो वहाँ पे जो वो था फोर्स के जो हेड थे ना, एंड वो कभी बिल्कुल Yeah, I think it's the same issue of the connection, right? Shahzad, Shahzad, आप unmute के हो. Can we ask Naziha to maybe for some time, let's try after turning her video off, and then with audio for some time, and then because it seems it's connection issue. Yeah, Naziha, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, if you could hear us, maybe yeah, अभी बात करें, या maybe reconnect करें, हो सकता है उससे, sometimes reconnecting helps. So I would suggest कि अच्छा, okay, अभी तो आपकी आवाज just go आई. off and आ रही है तो just keep it without the camera then I guess. Okay, If you can okay. hear me all right. Yeah, oh yes, Yeah. we Yeah. can. Yeah. Then let's just keep it this way. Yeah. जी, तो आपकी वो जो मिसिंग पर्सन की स्टोरी का आप रेफरेंस दे रही थी और आप पॉइंट ऑफ व्यू लेना हाँ, चाहती थी एफसी का बलूचिस्तान में, तो वी मिस दैट जी एक्चुअली. जी. So I was just saying that this but sometimes I say, in stories like this, you get this, जैसा FC की वो missing people के उसमें मैंने after I came back from there, I called up the FC जो वहाँ पे local वो था ना, and talked to the head. So they were completely taken aback because I don't think that ever had a journalist calling up and talking to them about missing people or anything. So that was kind of like I just caught them unawares. But Bahria, yeah, you just can't. You just have to keep trying, and then you go ahead without their version, and you just mention it. Obviously, कि हमने try किया. ये मैंने यहाँ पे भी देखा है, अमेरिका में भी काफ़ी जब इस किस्म की रिपोर्टिंग आती है तो जो पॉइंट ऑफ व्यू लोग नहीं देते, लेकिन कभी कभी यहाँ पे एटलीस्ट रिटन स्टेटमेंट दे देते हैं, दे गिव यू रिटन रिस्पॉन्स, लेकिन Yes. obvious, yeah. What I think was most surprising, if I may add, was कि like the last story I did on Malik Riaz, the Art of the Deal wali उसमें. I mean, Shahzad Akbar, who is the advisor on accountability, उनसे मैंने सवालात पूरे भेजे उनको व्हाट्सएप पे, contacted him again, he saw it, never acknowledged, and मैं एंड में मैंने ये भी कहा उनसे, मैंने because I mean, I guess one shouldn't be shocked, but it is like they don't consider it their duty. It is their duty to talk to you. They owe it to us. You see, they owe it to us, and that is something that is
kya kare, it's incomprehensible. Those are the kind of limitations you have to work with. They don't think they have any duty to you. Yeah. So, Shahzad, do you want to go ahead with your question? Yes, sure. Thank you so much, Naziha, for joining us. They're very We have seen that there are so many details in your stories about different aspects and different areas, like government ka role, different institutions ka role, starting from the Board of Revenue, then MDA, then police. So I have this specific question. Um, could you tell us that how do you think a Board of Revenue or MDA specifically will come later to the role of police? MDA और Board of Revenue का इस पूरी जो बैरिया टाउन की जो ये स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है, इसमें क्या रोल रहा? बिकॉज यू मेंशन के इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने एलोकेशन पे जब बैन लगाया, सिंध गवर्नमेंट को मना किया, तो देन दे वेंट अहेड एंड चेंज द लॉ. So can you share those details with us कि क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का या सिंध गवर्नमेंट का रोल है, एंड देन एमडीए का रोल क्या है? इज इट एज पर द लॉ और डू यू थिंक कि it became very skewed? basically, अगर आप in a nutshell देखें ना, this is like the betrayal of the citizens by the state. The state is what the Sindh government in this province, right? And the Sindh government Board of Revenue बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल complicit रहा है. Instead of protecting the citizens, it has not only turned its back on them, it has joined hands with people who have destroyed their lives and livelihoods. इन्होंने नवंबर में जो I think we have connection issue with Naziha. no, अभी भी आपको नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है Naziha, but बीच में it breaks sometimes. Okay, let me just start again. तो BOR ने बेसिकली ये किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था नवंबर 28 का 2012 में कि बैनिंग ऑल ट्रांसफर अलॉटमेंट म्यूटेशन ऑफ पब्लिक लैंड, उसको सर्कमवेंट करने के लिए उन्होंने एमडीए का लॉ, बिकॉज BOR वाज उन्होंने की, you know about that, वो के दूर दूर के लैंड से कहाँ कहाँ बहुत दूर दराज के जो उनके देह हैं वहां से लेके उन्होंने सुपर हाईवे के पास उनको वो किया, एक्सचेंज किया लैंड को. वहां पे कंसोलिडेशन इज अ वेरी, it's a legal this thing, legal, perfectly legal method जिसमें कोई भी owner of land, agricultural land, it says agriculture to BOR के उसको consolidate कर लें into one piece of land, ठीक है, not exceeding 16 acres. That also the law says not exceeding 16 acres and subject to the same conditions. जाहिर है आप दूर दराज के आप उसमें वो देर के जमीन को आप लेके सुपर हाईवे के पास रखें, suddenly the value of his land goes up, जाहिर है, right? So you are not allowed to do that. So उन्होंने they changed the thing to give MDA the power of consolidating the land. फिर MDA ने लाके उसको सुपर हाईवे के पास बिठाया, purchased pieces of private land from various people further in this thing, Mali district में, up north में, further in this thing, and उसको वो उठा के उन्होंने इधर exchange किया. 7,000 something acres they claimed कि वो exchange किया. 7,000 के इधर उधर scattered थे ना, उन्होंने पूरे sort of एक वो कर लिया उसको ना, like joining scattered areas को पूरा made it all into one, like like हर scattered उसको around it all
completely इसमें वो था, and Supreme Court also recognized it. Supreme Court के verdict में अगर आप देखें, in fact जो petition चल रहा था ना, अगर कोई follow करे petition के course को, वो देखेंगे कि Supreme Court was getting, the court was getting very frustrated because nobody was giving them information. वो उनको questions पूछते थे, whether it was the वो BOR को या MDA को, गोल मोल करके उनको कोई literally कोई जवाब नहीं दे रहा था. And after we did the story, the picture कि ये हो रहा है. So they could ask very pointed questions. और आप verdict में जिस तरह देखें, verdict में Supreme Court has been very clear in saying कि what something like what magic did this developer weave, that all these functionaries of the Sindh government were dancing to his tune, something to that effect. Because they literally did what he wanted. So ये बिल्कुल hand in glove थे उसके साथ. Or the tragedy is I think there's distraction in Naziha's connection. Can Exactly. we try I think let's ask reconnecting? her. Exactly. I think Yeah. that may help us, or unless someone is really trying to block her access to I don't- internet, which हाँ, क्योंकि आप Let's try सत्तर restarting. हाँ, नज़ीहा, अगर आपको आवाज आ रही है, if you could reconnect yourself, I think that would be the right thing. Yeah, just disconnect and reconnect again that way. Achha, this is interesting because we speak with the people in Nosharo Feroz and Sakha Ladkana, and the connection is always good. I mean, तव्हां संजय के नंढे शहर में भी कई माण्हू सां वीडियो कॉल कयो, WhatsApp ते, FaceTime te, it works. But somehow, if you remember when we spoke to Fahim Khan Saab, he also had a similar problems. And today when Naziha, Dawn's assistant editor, she's talking about her work, and we are having a frequent disruptions in her voice. Naziha, can you hear us? Can you reconnect? Yes, I can hear you. हाँ, लेकिन आपकी आवाज जो है वो गायब हो जाती है बिल्कुल, और बिल्कुल it becomes incomprehensible. तो I would suggest, अगर possible है तो disconnect करें और फिर connect करें. I did disconnect actually. You did? Oh, okay. I did. Okay, great. Yeah. Selling good. Naziha, let's start, since we have established the connection again. Let's start with the video and give it a try. If it works, it'll be great, because obviously our viewers would be more interested in listening to you and actually knowing that what you have to add to this story. So it'll be great if you can. Yeah, of course, start cam. Yeah, thank you. So thanks for sharing those details कि कैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो है वो अपना रोल प्ले किया, फिर एमडीए को वो अथॉरिटीज दी गई जो उनके पास नहीं थी कंसोलिडेशन की, फिर कंसोलिडेशन जो है वो जिस पर्पसेस के लिए होती है उसके लिए नहीं हुई. It is alarming detail that is there out in your story. That the Board of Revenue and the MDA were dancing to his tune, something like that, So they recognized कि ये बिल्कुल इसमें मुलव्वस थे, completely through and through. अच्छा, अब नज़ीहा एक और चीज़ थी कि ये जो मलीर के 9 days में से ये BOR ने रिजर्व की थी जमीन फॉर लो कॉस्ट इंक्रीमेंटल हाउसिंग के लिए, और उन्होंने इंस्टेड
Yeah, Naziha, we lost you again. So I would say let's go back and switch off the video because Yeah. yes, this is Okay. yeah, this is so All right. sad. I mean, you're saying Ji. Yes, yeah, Nazia, so Mushtaq, I've just a follow-up question yeah, on that. sure. So नज़िया आपने ये दो जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में आपने शेयर की डिटेल्स आपकी स्टोरी में ये भी है कि पुलिस का जो रोल है सिंस द बिगिनिंग फ्रॉम द टाइम के जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ एंड दैट वाज द टाइम जब राव अनवर वाज यू नो ऑन द मेन स्टेज एंड एवरीवन इन पाकिस्तान नोज हु राव अनवर इज एंड उनकी क्या केसेस हैं क्या उनकी रेपुटेशन है तो उसके अलावा फिर टेररिज्म के केसेस हुए जब भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो स्टार्टिंग से ऐसी टैक्टिक्स यूज की गई कि जैसे इन लोगों को बोलने भी नहीं देना और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ते जाना है बिकॉज पुलिस का जो एक रोल था वो इनको एक ऐसे मिला जैसे इनकी प्राइवेट एक सिक्योरिटी कंपनी हो उनको जैसे भी यूज करें रिसेंटली भी हमने देखा ग्राफ्स में फोटोग्राफ्स में और वीडियोस में के कैसे पुलिस जो है उनके साथ जाती है तो हाउ डू यू सी कि पुलिस का रोल इस पूरे बहरिया टाउन एपिसोड में क्या रहा है इम्पार्शल रहा है जैसा उनका होना चाहिए लीगली या उन्होंने इसमें कोई डाउटफुल रोल प्ले किया है नहीं, बिल्कुल ही इम्पार्शियल रोल नहीं रहा है. इनफैक्ट दे हैव एक्टेड एज अ प्राइवेट फोर्स ऑफ बहरिया. एंड हमें तो ये भी एक बताया गया था कि वन ऑफ द I won't name him, one of the SSPs was appointed on the say-so of Malik Riaz. And I have that in my story. So, यस I mean, for the people, it was like, दिन में भी आ जाते थे. Course. जी तो हम पुलिस के रोल पे बात कर रहे हैं विज़ावी बहरिया टाउन और नज़िया हमें बता रही थी कि किस तरह जो पुलिस है वो वाज वर्किंग एज अ प्राइवेट फोर्स फॉर मलिक रियाज नॉट अपहोल्डिंग द लॉ नज़िया एक जो बात बार बार आई है वो ये है कि जो 7,000 एकड़ ज़मीन मलिर एमडीए ने जो दी बहरिया टाउन को और बहरिया ने उसके 8 अरब रुपए जो हैं वो पे किए टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध लेकिन वो पे नहीं किए गए बल्कि उन्हीं पैसों का डेवलपमेंट वर्क करवाया गया इनसाइड द बहरिया टाउन Yes, exactly. So that tells you how everybody is kind of instrumental in in part of this criminal enterprise. May everybody has a role to play. You know? या लाइक व्हाट इज एक्सट्रीमली शॉकिंग कि एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर एक गवर्नमेंट का इदारा यानी डेवलपमेंट काम कैसे करा सकता है आई मीन नहीं, this story literally defies belief. Literally आप देखो तो every step of the way आप सोचें कि किस तरह से अच्छा हाँ जब तक इनकी आवाज रिस्टोर हो अच्छा मैं शहजाद आपको बताना चलूं कि क्योंकि नवाब शाह में भी बहरिया टाउन जो है वो उसका भी संगे बुनियाद जो है ना पूरा सिंध बहरिया टाउन बन जाएगा इनका बस चले तो आई थिंक दे विल रीनेम सिंध एज अ बहरिया टाउन यू नो तो अच्छा सोहेल वहां पे भी इंटरेस्टिंग बात हुई कि बहरिया टाउन के साथ जो नहर थी जो वाटर कोर्स था तो वो एक प्रोजेक्ट था कि वाटर कोर्स की लाइनिंग करनी है उसको पक्का करना है तो मैं क्योंकि बजट रिव्यू करता हूं तो मैं बजट के पेपर्स देख रहा था तो मैंने वो जब देखा हिस्सा कि नवाब शाह की जो नहर है वो पक्की हो रही है तो वो नहर पक्की करते हैं तो आप या तो शुरू से
स्टार्ट करें, फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बीच में आधा करें, बीच में आधा करें। तो नवाब शाह का पोर्शन वो कवर कर रहे थे उसको पक्का करने का। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने पैसे थे, इट वाज इन बिलियंस ऑफ रुपीज। तो मैंने कहा कि भाई आपने वहां से जो शुरू की थी तो बीच में छोड़ के फिर नवाब शाह का हिस्सा क्यों कवर कर रहे हैं पहले? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि बहरिया टाउन के प्लॉट्स हैं, यहाँ पे बहरिया टाउन बन रहा है, तो अगर वो पानी, अगर ये नहर पक्की नहीं होगी तो नीचे से सीपेज आएगा, तो उनकी कंस्ट्रक्शन डिस्टर्ब होगी। तो बहरिया टाउन नवाब शाह को बचाने के लिए जो वाटर लाइनिंग थी, वाटर कोर्स की, वो उन्होंने वहां से शुरू कर दी। Now, this is all about necessity of their special interest, right? उसमें काम होता है, उसमें development हो रही है. I don't know if Nazia is back with us. It's odd because I could hear you all fine throughout this. When you all couldn't hear me, I could see you all and I could hear you fine. It's very odd. हाँ, अभी आपने जो ये बोला तो वो हम सुन पाए थे, लेकिन जैसे ही आप जाती है ना डिटेल्स में तो I don't know, maybe internet is conspiring, you know. मुझे तो ऑनेस्टली शक हो रहा है कि बिकॉज देखिए, मैं इनसे कह रहा था कि मैं लाड़काना से बात करता हूँ, जैकोबाबाद से बात होती है, वीडियो सब कुछ, everything is fine. Maybe the timing, but since we have Nazia back, allow me, Mushtaq, one question I do want to pose. Please go ahead. In kind of Nazia, as you were touching on the capability of this enterprise, so there are a lot of interesting characters around it, and we cannot eliminate the political context of the story. How much did you find in your investigative story that Malik Riaz is truly connected, and how far and deep his reach was? Well, for one thing, I think it is everybody, it's like all pieces of a jigsaw, all kind of. I think the only time that the construction was stopped was after the May 4 judgment जो आया था ना 2018 वाला, उसके बाद कुछ हुआ. So it was like nothing was stopping Bahria. It was literally nothing. And the kind of people who were connected, military, retired military officials would be, there were a few names I'm not going to take right now, few names which are repeatedly mentioned by the villagers, jo aate the, and the police being there. So all that kind of adds to the air of invincibility and the very fact that nobody wanted to talk about it. I mean, like when I was doing the expansion into Bahria, usme I couldn't get people to talk to me, because not only because of Malik Riaz, because of Malik Riaz, Bahria to thoda sa dur tha, because of Malik Asad Sikandar. For 2 months, I couldn't get a single villager to speak with me because there was get 2 villagers to come and talk to me in the office. I think they were trying to suss me out, ke bhai, ke baat karke zara to ke confidence ke liye, ke bhai. So they came and talked to me along with the source of mine over there. Then we met at this restaurant of Surab, go to somewhere ke paas, Sujani somewhere. And they sat in a taxi. They were in a taxi. And first they saw me, and then they think, हाँ ठीक है, सही है, चलो मिल ले. Yeah, we are back, folks, where we were. Yeah, Mushtaq, is it possible if we can connect with Naziha on her cell phone so that at least we can get the audio consistently, and then she can share the video through this streaming? Sure, I'll connect on this thing. Okay, let me switch off from here.
Sohail, do we have the capability technically? I mean, I don't think from this software we can call her own phone, right? No, I don't think so. Sohail, unmute yourself, please. Nay, I think this is a good suggestion from Shazad. Let's connect through your cell phone, because it's very likely that you guys have better connection through cell phones than what you're getting in the home. So let's try Okay. that. So how Yeah, does this gonna work? So I mean, she has the You just come in again from her using the phone. same through link. cell phone, yes. Yeah, ये Should I connection आप close कर लें. Then just try should to I connect from from my phone? Should I switch off from here? Yeah, if you could do that, and try if you have that, it's possible to use your cell phone, Data network instead of Wi-Fi. Okay. There'll be, I think sometimes it works. Yeah. Yeah, let's give it a try. एग्जैक्टली अच्छा तो जब तक नज़िया वापस आ जाएं तब तक जो हम बात कर रहे थे तो देखिए एक तो ये इस सारी जमीन का जो हिसाब आ रहा है उस दिन जो गुलशन कलमती हमें बता रहे थे कि जो आम लोग हैं उन्होंने तो सिर्फ 500 एकड़ जो जमीन है वो सेल की है बहरिया को एमडीए की लैंड 7,000 है तो इनके पास फिर इतनी लैंड कहाँ से आई यानी वो तो फिर लैंड उन्होंने खरीदी नहीं है जो सिंध गवर्नमेंट को पे किए हैं वो तो किए हैं उन 7,000 एकड़ के पैसे So see, technically it's possible, and that's what they have done. I think what you have to understand, that Supreme Court, like Nazia was saying, like Gulmati was saying as well, what they did, that they in the end also gave the authority to MDA, right? Now given MDA the full authority, they are consolidating the land, right? They have the authority now, unless you have a conscious government who can say that there is a limit to it, what you will do. You have to have in this situation a political will to say that we are not going to Jay, can you see me now? जी बिल्कुल नज़िया आपकी आवाज भी आ रही है और suffocate the marginalized people. So abhi Nazia isi mawzu pe maybe you can elaborate upon. हाँ मैंने सोहेल से कहा कि मैंने कहा कि जो पिछले हफ्ते हमारी गुलशन कलमती से बात हुई तो वो कह रहे थे कि भाई ये जो मरीर के लोगों पे इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने खुद ज़मीनें भेजी हैं और तो उसने कहा कि भाई टोटल 500 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो लोगों ने प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने सेल की है ठीक है और जो एमडीए की बात आ रही है वो भी तकरीबन 7,000 एकड़ की बात आ रही है जिसकी पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को वट एवर मैनर ऑन पेपर्स की गई तो इनके पास बाकी जो 17,000 एकड़ जमीन है या 23,000 एकड़ जमीन है और आपकी जो पहली स्टोरी थी आपने उस पर रिपोर्ट किया था कि अकॉर्डिंग टू योर सर्वे दे हैव 43,000 एकर्स ऑफ द लैंड तो लगता तो यही है कि सारी सरकार की जमीन है लोगों से उन्होंने This connection is much worse for me. I can't hear you very well. It keeps breaking up. ओके तो हाँ मैं रिपीट कर देता हूं अगर आपको आवाज आए तो बात हो रही है बहरिया की जमीन कहाँ से आई लोगों ने तो दी है 500 एकड़ एमडीए से उन्होंने लिए 7,000 एकड़ Can you repeat that? ऐसे कि बहरिया के पास जो जमीन है जी मैं कह रहा हूं कि बहरिया के पास जो जमीन है अव्वल तो उसका तयन करना कितनी है we lost her. Sorry folks, I mean जब भी आप पाकिस्तान से बात किसी से करेंगे तो ये इस वेरी मच पॉसिबल कि सिग्नल जो है वो कमज़ोर होते हैं पाकिस्तान में हालांकि इंटरनेट पाकिस्तान में लाइव स्ट्रीमिंग होती है पीपल वॉच मूवीज ऑन तो let me add her. Yeah, unfortunately, it's just acting up. I don't know why. It was much worse actually on the 4G, on my phone. Yeah. हालांकि फिर पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पे लोग कैसे मूवीज देखते हैं अगर इंटरनेट का I watch it all the time on my Wi-Fi. I don't have a problem. So this is very odd. It's very strange. तो फिर मेरा शक जो है वो सही है. I don't know. There are people who do not want you to speak on these matters.
Naziha is being censored. Yeah, I can hear you. You can, You yeah. were talking about the zameen. जी, वो एक बड़ा क्वेश्चन है ना कि इनके पास जमीन आखिर कितनी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमीन दी 16,800 समथिंग, राइट? Yes. And और और जी, जी और वो जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच का वर्डिक्ट जो था वो उसके 16,896 के बियॉन्ड दैट इनका कुछ टाइटल नहीं है इस पे एंड सिंध गवर्नमेंट शुरू किए March since the verdict came out उन्होंने stop नहीं किया they were making roads road network was expand कर रहे थे into Jamshoro and now they are well inside Jamshoro so they haven't and now they obviously like in my second story जो मैंने बताया वो थोड़ा सा now indirect तरीके से वो कर रहे थे they had a lot of front men involved like in the first उसमें वो बिल्कुल बेधड़क they thought nobody was ever going to find out and or expose it rather you know second then they wised up uske baad now they were using farmers se leke then they had that was being sold to the front men then the front men were kind of Bahria ke ek do layers ke through ja raha tha so it's difficult to say how much land they have because it's one thing to say कि development जिस पे हुई है and then there's the road network spreading then there's the pressure on the villages to leave their land villagers to sell their land or leave their land whatever it's difficult to really quantify and no and nobody would respond to them how much land do they have हाँ, और सिंध गवर्नमेंट तो उनसे पूछेगी नहीं, बिल्कुल नहीं क्योंकि उनके बगैर तो बहरिया बन नहीं सकता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी यानी मलीर के देहातों को पाकिस्तान बनने के बाद अब तक रोड नहीं मिले, पानी नहीं मिला। और उस दिन भी बड़ी अच्छी बात हुई कि यानी जो वाटर कनेक्शन दिए गए हैं बहरिया को, 4 वाटर कनेक्शन दिए गए हैं। ज़ाहिर है इतनी बड़ी आबादी वहाँ रहेगी, उनको पीने का पानी तो चाहिए। और आपने एक और इशू उठाया है अपनी एक स्टोरी में जो जिस पे बात कम हुई है, वो है सैंड माइनिंग और जो वाटर ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन हो रही है, उसका जो इम्पैक्ट है जी लॉन्ग टर्म, उस पे बहुत कम बात हुई है। यानी वो क्योंकि लोग जमीन पे कब्जा हो गया, ये हो गया, वो बातें करना इजी होती हैं, ये थोड़ी दोनों चीजें इन अ वे टेंजिबल भी हैं, लेकिन लोगों को नजर नहीं आती किस तरह से सैंड माइनिंग हो रही है और ग्राउंड वाटर की जो Yeah, we lost her again. I think somebody suggested, Mushtaq, you can try to get her on WhatsApp and just put it on. How do we do that? WhatsApp पे I think if it is put her internet, on speaker. Yeah. if it is internet, it'll be same. If you can call her cell phone, yeah, she's back. Yeah. She's back. Pakistan number, maybe. yeah Yeah. I'll probably disappear again kya kare No yeah the problem. sand No, thank- mining is a huge Go ahead. disaster of course huge because इसके can you hear me Yep. इस बारे में तो इसके बारे में तो हमने मलिक असद सिकंदर से भी पूछा था उन्होंने कहा बिल्कुल लीगल उस पे लीजेस के अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज़ द लॉ अलाउ निकालेंगे तो जाहिर है फिर पानी पूरा बह जाएगा आपका वाटर लेवल वो नहीं होगा ऑल द फार्मर्स की ये वो थी कि हमें पहले 50 या 80 फीट पे मिल जाता था पानी अब हमें 300 फीट पे मुश्किल से मिलता है ट्यूबवेल्स लगानी होती है जैसे मोर एंड मोर हमारे वो एक्सपेंडिचर होता है टू एक्सट्रैक्ट द वाटर तो ये it's a huge environmental disaster which we will suffer in the years to come and I think आरिफ हसन साहब जो है नहीं अर्बन प्लानर जो हैं जी जी बिल्कुल and now it's barely 10% आती है हमारे पास because तबाही कर दी है उन्होंने उधर yeah
और फिर आप जैसे लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, इश्यूज पे रिपोर्ट करते हैं, और फिर प्रोपेगेंडा होता है आप जैसे लोगों के खिलाफ, इवन हमारे खिलाफ भी, कि जी इतनी बड़ी तरक्की हो रही है। जब एतजाद हसन जैसा आदमी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कहे कि जी मलिर एक बैरन लैंड है, उसमें मलिक रियाज जो है वो तरक्की ला रहे हैं और आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं, यू नो। और जरदारी साहब जो ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को कि बहरिया टाउन हर शहर में आ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। I think we have connection issues again with Naziha, so Yeah, Naziha, so sorry that this is not, doesn't seem working. Yeah. अच्छा शहजाद, मतलब बहरिया टाउन कराची जी गाल थे पई, पर खुद जेको जाम शोरे में जेका 5000 एकड़ बनी आ जेका ॾिनी वई आ, ख़ासि तौर ते तो जामशोरो जी गाल, नजिया जामशोरों की बात कम होती है, जो वहां पे उनको 5000 एकड़ जमीन देहमोल में जो आपने रिपोर्ट किया दी गई। और उसके पैसे जो किकबैक्स की सूरत में जो फ्रंटमैन थे उन्होंने जमा कराए अकाउंट्स में, जेआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक वो भी सामने आए। Mushtaq, is it possible for you to call Naziha on WhatsApp or her cell number, and then at least let's her have her audio? आई थिंक टेक्निकली हम नहीं कर पाएंगे, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो She won't be in the room, but you will have her on the speaker. So Yeah, on the cell phone. या ये कैसे हुआ कि आपकी दो तस्वीरें आ रही Is हैं? it possible for you to just call me on the phone? Yeah, that's हाँ, Yeah, लेकिन that's मैं very what odd. we are thinking. Is it possible for you to just phone मैं me? कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं Is पता that कि वो फिर वो no. मैं Mushtaq, you have to just keep it. because this never happens? This is very strange. Yeah. हाँ नहीं, वो तो आई थिंक देयर आर पीपल हु बी डूइंग इट डिलिबरेटली बिकॉज दे डोंट वांट यू टू स्पीक, यू नो। अंग्रेजी में आपने लिख दिया है, वो तो कौन पढ़ेगा? वो तो कितनी आबादी पढ़ेगी? जब आप उर्दू में बात करेंगी, सोशल मीडिया पे बात करेंगी, तो यू नो आगाही जो है वो ना जाए, दैट्स व्हाट दे scared. Yeah, I don't know if our platform requires more bandwidth. It's strange. Yeah, तो ये timing of the day है, right? It's a peak Yeah, time I think over it's the there. connection back home It's in peak Pakistan. time over there, right? Okay, जी मैं अभी इनको फोन पे ट्राई कर रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है? Speak, keep it on. आप Perfect. सुहेल, आप सुन सकते हैं इनको अभी? हाँ, ओके जी। keep her on speaker with the keep your volume high. ओके। तो हम बात कर रहे थे, वो जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, जो सैंड माइनिंग का और ग्राउंड वाटर का और उसके इम्पैक्ट की हम बात कर रहे थे, अगर उसको कंप्लीट कर लें तो। हमने मलिक असद सिकंदर से बात की थी, इससे पूछा था हमने कि भाई ये जो सैंड माइनिंग हो रही है, उन्होंने कहा ये बहुत बिल्कुल लीगल उससे हो रहा है, गीजर्स है उनके पास, which is not correct because एक तो सैंड माइनिंग का जो लॉ है, according to that there's a certain amount of sand that you can remove, देखो जितनी वो रिप्लेनिश हो सके, right, every rainy season। आप ज्यादा करेंगे तो जाहिर है फिर बिल्कुल पानी तो वो just go across and it won't sink into the ground, वो water level नहीं, water table replenish नहीं होगा। और तो कितने सारे फार्मर्स का ही, अगर आप पूछे, उनका सबका यही रोना था कि पहले हमें 50-80 फीट पे मिल जाता था पानी, ज्यादा से ज्यादा 100 फीट पे, और अब ये है कि 300-400 फीट पे मिलता है। ट्यूबवेल का वो करना पड़ता है हमें ज्यादा, वो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और पूरी
हर पूरे जो नजदीक है वो नदी के मूल नदी के वहां पे तो कहते पूरे उनके क्रॉप्स के ऊपर पूरी मट्टी पड़ी हुई होती है ना, लाइक ऑब्वियसली वो जो सैंड माइनिंग होती है उससे डस्ट जोड़ रही है. इट्स अ टेरेबल डिजास्टर जो हमें फ्यूचर में हम देखेंगे उसके इफेक्ट्स क्या होंगे कराची पर. राइट. यस शहजाद. शहजाद अनम्यूट करें आप. I'm not sure if Naziha would be able to yeah hear me. She can. I think no. Yeah, you have to I think pose the question. ओके. अच्छा नज़ीहा, इसके साथ हमने बात की कि जो जिस तरह आपकी जामशोरों पे जो स्टोरी है और वो 5,000 एकड़ ज़मीन जो दी गई बहरिया को वहाँ पे, और उस पे तो काफ़ी लोगों ने आपसे बात भी की, यू नो, जब आपने उनको कन्विंस किया कि, और आपने कुछ नाम भी लोगों को दिए हैं, तो क्योंकि गुफ्तगू सारी मोस्टली कन्फाइन रहती है बहरिया टाउन कराची पे, तो उनकी जो एक्सपेंशन है जामशोरों के अंदर और वहाँ की जो, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास कागजात नहीं थे ज़मीन के, और जब वो गए मलक असद सिकंदर के पास के जी ज़मीन के पेपर्स होने चाहिए, बनवा के दें, तो सरदार ने नहीं बनवाने दिए उनको, तो वो भी तो एक बड़ा इशू है. वहाँ तो फ्यूडल सिस्टम जो इतना स्ट्रॉन्ग है ना, उससे बहुत वो फर्क होता है कि जो भी लोग, जैसा मंदिर में फिर भी मुझे लोग मिलते जो बात करने के लिए तैयार थे, लड़ने के लिए तैयार थे. जामशोरों का आप वेरी स्ट्रेंज, आप वो जामशोरों में जाओ, वो सिस्टम ही बिल्कुल चेंज होता है. अब आई डोंट नो आपने कुछ सुना है कि जो लोग 2 महीने लगे किसी से कॉन्टेक्ट करने में, विलेजर्स बात ही नहीं करने के लिए तैयार थे. तो उससे जो खौफ है, और वो बिल्कुल इट्स बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्यूडल सिस्टम. और वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वो गए थे, वो कह रहे थे हमें रेगुलराइज करना है ताकि इस तरह से हमारी जमीन ना छीने जाए. तो उन्होंने कहा, मलिक असद सिकंदर ने कहा कि भाई तुम क्या वो क्यों वो करते हो, मुझे भी जुल्फ़िकार मिर्जा की तरह बनवाओगे, हशर करवाओगे इस तरह से. तो ठीक है, तो वो कह रहे थे कि भाई हमारा सरदार हमारे साथ नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, ये उनका हाल है. और वेरी रिसेंटली मेरी दोबारा वहाँ मैं गई थी, तो एक वहाँ पे एक किसान मिला था मुझे, उसने तो मुझे पूरे कागजात उसके पास थे, उसकी पूरी जमीन के बोनाफाइड पेपर्स थे, ओनरशिप के, टाइटल के, और वो बिल्कुल उसके रास्ते में था. वो जो बहरिया की जो रोड बन रही है जामशोरों के अंदर जो आ रही है, बिल्कुल उसके रास्ते नहीं हो कि आप उसका आने में फ्यू मंथ उसकी भी जमीन जाएगी. तो इट्स नॉट लाइक किसी के पास पेपर नहीं है. मगर द डिफरेंस वाज 2 साल पहले कोई मुझे जो मुश्किल हो रही थी मुझे किसी से बात करने, इस बार ये बंदा ने कहा हाँ मैं बात करूँगा, किससे बात करूँगा, मैं आपके कागजात भी दे रहा, आपको रिकॉर्ड दे सकते. So there's a difference, you know. फिर भी now it's come to a point that people are now beginning to get really angry about it. And I feel that if we come to this resistance का वो, मुझे लगता है कि एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है, लोगों को अवेयरनेस आई है कि ये कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल. हाँ, लोगों को एक अवेयरनेस आई, जिस तरह ये पहले भी थी, ये बिल्कुल बैलेंस जमीन थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं था. अब लोगों को रिपोर्टिंग लोगों की वजह से सोशल मीडिया पे जिस बातें चली है, तो लोगों को मालूम हुआ है कि यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोगों का रहन सहन, यहाँ पे सदियों से, जनरेशन से लोग आबाद हैं. उनकी जिंदगी, उनकी हिस्ट्री, सब कुछ यहाँ पे इससे वाबस्ता है, ये लैंड से. और ये कोई बैरन बंजर जमीन नहीं है, ये बारानी यहाँ पे वो होती है, खेती बाड़ी होती है. तो लोगों को एक नॉलेज जो है ना, उससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये मूवमेंट पे एक एक्शन आया है, जो जिसको मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट इनकी आवाज थोड़ी सुनी जा रही है. अल्टीमेटली क्या होगा मुझे मैं ये नहीं कह सकती, बट एटलीस्ट दे आर एबल टू पुट अप अ फाइट, यू नो. नहीं, आई थिंक बिल्कुल बड़ा इम्पैक्ट है. इट हैज़ टेकन अ वाइल, वक्त लगा है, क्योंकि यानी 4-5 साल से ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, और जिस तरह से आपने रिपोर्टिंग की है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन अभी चीज़ें जो हैं वो मोमेंटम जनरेट कर रही हैं. और क्योंकि हम आपसे उस मौजू पे बात नहीं करेंगे, कल जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आप भी ऑब्जर्व कर रही हैं कि किस तरह से अब जो सियासी लोग हैं. और इट्स इंटरेस्टिंग कि इवन हम कल बात कर रहे थे कि इवन ह्यूस्टन में, यू नो, एंड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन, पीपल विल बी प्रोटेस्टिंग टुमारो, यू नो, व्हिच इज, यू नो, कि किस तरह से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो अपने लोगों का दर्द महसूस करते हैं,
और जो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए बात करते हैं। अच्छा, एक और बात थी कि अब बहरिया, क्योंकि उसका नाम है, मलिक रियाज है, और उसके साथ जो नेक्सस बनता है सरकारी इदारों का, उसका नाम लेना, सिविलियंस का नाम लेना तो बहुत समाव सभी ले लेते हैं ना जब उन पे तनकीद होती है। बात जब डीएचए की आती है तो डीएचए की बात जब आती है तो अच्छे भले लोग जो हैं वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, सवाए आपकी उस स्टोरी के जो इंग्लिश मीडिया में तो थोड़ी बहुत बात होती है जी। आप अगर हमने जो स्टोरी की थी उसमें गो बैक टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो May 4, 2018 का जजमेंट था, उसमें उन्होंने डीएचए का भी मेंशन किया था कि डीएचए तो उन्होंने कहा रिपोर्ट्स हैं कि डीएचए किसी के लिए भी जो जमीन दी गई थी बहुत ही कम दाम पे दी गई। वहां पे उन्होंने लॉ ये वो को चेंज नहीं किया बिकॉज उन्होंने वो 2012 का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का बैनिंग म्यूटेशन एंड ऑल ऑफ गवर्नमेंट लैंड, उससे पहले ही हो गया था ये, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ डीएचए का लैंड उससे पहले से ही उन्होंने ले लिया था। तो मदर उन्होंने जो दाम पे दिया, आप सोचें, they took it at 1 lakh per acre। जी हाँ, 1 लाख में 1 एकड़, यस। और आप सोचिए उस टाइम पे जमीन वहां पे एटलीस्ट 10 लाख पर एकड़, ठीक है। और आप ये भी सोचिए अकॉर्डिंग टू द लो कॉस्ट हाउसिंग पे अगर गवर्नमेंट दे रही है लैंड तो दे हैव टू गिव इट मिनिमम कंसेशनरी रेट पे दे सकते हैं फॉर इंक्रीमेंटल हाउसिंग, मगर इट मस्ट बी एटलीस्ट 25% ऑफ द मार्केट प्राइस। दैट वुड बी 250,000 rupees, right? Yeah. ये ने लिया है लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के लिए जो जितना पैसा उससे भी कम में लिया उन्होंने अब से। राइट, बिल्कुल। फिर बड़ी अच्छी स्टोरी आई थी बहरिया डीएचए की कंपोजिशन ओरिजिन पे, जो आई थिंक समाज टीवी के वेबसाइट पे आई थी। दैट वाज आल्सो वेरी आई ओपनिंग के जो उसके जो डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड है उसका जो मेंबरान हैं जो रन करते हैं बहरिया को, अपने डीएचए को, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। या तो ओके, heard anything about it, although the Supreme Court said that, who was ever going to take notice of that? या अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, अब आपको लगता है कि उस पे जो इम्प्लीमेंटेशन तो 3 साल से तो नहीं हो रही, तो डू यू सी एनी होप, एनी लाइट के उस पे अमल होगा? कोई उसकी रिट जो है वो सिंध गवर्नमेंट या कोई, यानी जाहिर है वो एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि उसे इम्प्लीमेंट करे। I think the judgment, the implementation bench का जो judgment था वो बहुत ही problematic था. I won't say more, but it was very in the sense कि I don't want to get in trouble, but it was problematic in the sense that it was an implementation bench, but it's an implement नहीं किया letter in spirit what the May 4 judgment was. Main तो ये उन्होंने जो कहा है उनसे कि May 4 judgment ने कहा था कि references file हो against everybody who has broken the law, और इसमें specifically था कि references file नहीं होंगी unless Bahria doesn't kind of in a way ये जो ये agreement हुआ, ये schedule हो गया, जो payment of the schedule agree हुआ है उसके अगर if it doesn't follow through, then what about all the law that has been broken? What about all that nobody was held accountable? And when that happened, what message did it give to the other land grabbers in the city, of which there are so many? उनको ये मैसेज मिला कि भाई आप खुली छुट्टी आप कर लो, फिर जो भी करना है, एंड में कुछ नहीं होगा। आपको पता है एएसएफ की मैंने स्टोरी की थी, एएसएफ की भी, और एएसएफ ने soon after that story एक नोटिस आई थी in some Urdu papers telling all the leaders जो एएसएफ के प्लॉट्स में डील कर रहे थे कि just informing people कि हमने we stop the claim and all are if you deal with the आप in real estate dealers के साथ अगर वो करेंगे तो it's at your own risk, like because there was a little bit of like the शुरू हो रही थी उनके बीच
अरेबियन लिखा नहीं उससे, तो उसके बाद then again उसकी भी मार्केटिंग वैसे शुरू हो गई after this implementation bench का verdict. So implementation bench verdict in itself is very problematic. राइट. अच्छा, फिर कोर्ट ने कोई वजाहत नहीं की जो फाइन किया बहरिया टाउन को 459 बिलियन रुपीस का, कि वो पैसे क्योंकि हैं तो कराची के ज़मीन के, तो कोर्ट ने क्लियरली कहा नहीं कि वो पैसे उस सूबे को जाना चाहिए. हाँ, वो नहीं कहा है, and हाँ, वो एक शेड्यूल था, पर वो नहीं था, तो it left a lot of things unsaid, but it also said कि आगे बिल्कुल नहीं करना है, no land beyond the 60,896 acres, there has no title to that, right? मगर उसी के after that जो मेरी स्टोरी आई थी तो जामशोरों में वो जो रोड नेटवर्क बन रहा था, और मैंने वो सैटेलाइट के थ्रू दिखाया था. तो सिंस द जजमेंट में 2019 में जजमेंट हुई थी, सॉरी मार्च 2019 में implementation bench की जजमेंट आई थी. Since that month you could see they were continuing to build the roads, right? मगर the first installment was paid in September 2019, September or August, I think it was September. And I think, the story has come out, okay? The story has come out, और उसके बाद hearing हुई थी, I think October में, again, court की. The court didn't say, but really, our order clearly says, if you have no title to land, you want this edge, this 2,000 plus acres. So what is this road network doing? It's an obvious हो गया था ना, they were not abiding by the court's judgment. The court took no notice. Yeah. Those are things that they make you frankly. हम किस तरह का बोल चाहिए. At the end of the day, those given the authorities that should be holding these people to account, these parties to account, don't do that. राइट. अच्छा, फिर जो वो बहरिया को जो फाइन के पैसे देने थे, उसका भी एक जो टाइम पीरियड वो तो स्टिपुलेटेड था उस डिसीजन में, लेकिन फिर जिस तरह से वो पैसे अब जमा हो रहे हैं, अभी तो शायद पहली किस्ती जमा हुई है, उस पर भी आपने स्टोरी की थी, कि थोड़ा उसको ब्रीफली बताएंगी कि वो पैसे वाकई बहरिया के हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं जो अकाउंट में जमा कराए गए हैं. नहीं, वो जो सुप्रीम कोर्ट has created an account for Bahria ना, उसमें जा रहे हैं. They have paid installments जो उनके थे, they have paid them up till now. मगर अब जो obviously सबसे बड़ा like affront to justice, उसके वो जो 190 million pounds, उसमें जो 140 आए हैं, वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में. वो festive account, which means it has gone towards the payment of the 460 billion rupees की liability उसके towards गए हैं, which is completely outrageous. कि आपने एक चीज की वो की, आपको वहाँ पे आपके पैसे वो हुए, प्रॉफिट हुए, आपको दूसरी क्राइम आपने कमिट किया, आपने उसकी तरफ वो पैसे चले गए. Is that उससे कोई जस्टिस तो नहीं है ना, बिल्कुल. And moreover, वो जो पैसे प्रॉफिट हुए थे यूके के नेशनल क्राइम इंस्टीट्यूट over 140 million pounds, when he forfeited, it's no longer his money. So why did it go towards paying his liability? It's not his money. और फिर अच्छा, यानी चले हम संत गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, जो राइटली पीपल्स पार्टी को, और फिर अब तो सेंटर में पीटीआई की गवर्नमेंट है, और वो तो आए ही अकाउंटेबिलिटी और इन इश्यूज पे थे कि जी एहतसाब होगा, कोई करप्शन नहीं होगी, और जिस तरह से उन्होंने पूरा फैसिलिटेट किया इस पेमेंट को. बिल्कुल फैसिलिटेट किया. I mean, अगर आप जो चीज को नेशनल सिक्योरिटी तो वहाँ पे नहीं, आप तो किस तरह का बोल, नेशनल सिक्योरिटी इज ऑलवेज यूज्ड एज अ वे टू साइलेंस पीपल. और इसमें नेशनल सिक्योरिटी आपने का वो बनाया इशू. You can say that this is just a way to silence people. Maybe I think frankly, all the main parties are. It also what kind of powerful players are behind this whole enterprise. How powerful they are.
that they can, no matter which government is in power, no matter which government talks about accountability or whatever, ये enterprise कुछ नहीं होता है. Exactly. मुझे उस किताब का टाइटल याद आ रहा है, एन एलिटिस्ट इकोनॉमी फॉर एन एलीट. तो वेल बहुत शुक्रिया आपका. रियली अप्रिशिएट योर टाइम. आपने 1 घंटा हमें दिया और बावजूद इसके कि कनेक्शन पुअर रहा, लेकिन आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा. और थैंक यू वेरी मच. आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम टुडे विद अस. You're very welcome. Thank you so much. Take care. Bye. Bye. So, दोस्तों, पाण आदाब सुहेल ऐं मोहतरम शहजाद. जी. You guys are there, right? Yes. Okay. तो अब हाणे थोड़ी ॻाल्हि ॿोल था करी. सुभाणे जेको प्रोटेस्ट, अवल त महिरबानी पंहिंजी नज़िया जी, हुन असांखे टाइम ॾिनो. ऐं मां नथो अग्री कयां त इहो को कनेक्शन जो इशू हूंदो. देयर मस्ट बी अ डिलिबरेट अटेम्प्ट टू साइलेंट हर, अदरवाइज़ माण्हू राइट. पाण सभु ॻाल्हाईंदा आहियूं जिथे किथे यू कैन टॉक अबाउट, राइट. जॾहिं लाइव स्ट्रीमिंग करे सघो था त वीडियो कॉल व्हाट्स अ बिग डील. या इट्स अनफॉर्चुनेट के जब हम फ़हीम जमान साहब से भी बात कर रहे थे तो जब हो रहा था, फिर हमने उसके बाद और लोगों से बात की तो नहीं हुआ, फिर आज नज़िया से की तो हुआ. तो आई डोंट नो, इट कुड बी टेक्निकल, इट कुड बी एनीथिंग, बट यस इट्स अनफॉर्चुनेट. बट थैंक्स टू नज़िया के उन्होंने जो है कंटिन्यू रखा और उन्होंने जो है हमारे साथ डिटेल्स शेयर की. विल ट्राई टू get such opinion again and share with people so that insightful चीजें मिले. But as you said के असां सुभाणे जे उन ते ॻाल्हाए सघूं था जेको प्रोटेस्ट कॉल थी आहे उन जे बारे में. उनमें आई थिंक हिकिड़ो त पाण सभिनी अपील था करियूं सिंध जे समूरनि माण्हुनि खे त महिरबानी करे सुभाणे शरीक थियो. छो त ॻाल्हि रुगो कराची बहरिया टाउन जी कोन्हे का. इहे जेके जीअं मूं गुज़ारिश कई त जामशोरे में जीअं हुन अचनि था पिया, उतां जा जेके मक़ामी रहवासी आहिनि, ॻोठाणा आहिनि, उन्हनि जूं ज़रई ज़मीनूं जेके आहिनि उहे ॾिनी वयूं आहिनि बहरिया टाउन खे. 5000 एकड़ ॿनी जेका आहे उहा रिपोर्ट थी आहे त जामशोरे बि ॾिनी वई आहे. मूं गुज़ारिश कई नवाबशाह जी त यानी हाउसिंग स्कीम्स भले ठहनि, असांखे उन ते इतराज़ न आहे. ज़ाहिर आहे शहर वधनि था, आबादी वधे थी, नवां तव्हांखे हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ तव्हांखे, पर अंडर द लॉ त हुजे न. ही हिकिड़ो तरीक़ो आहे त तव्हां कानून ऐं जेके क़ाइदा उन्हनि सभिनी खे सेक्रीफाइस करे ऐं हिकिड़े प्राइवेट इंट्रस्ट कंपनी खे तव्हां वेठा ईअं फैसिलिटेट करियो. आई मीन दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, राइट. बिल्कुलु. ऐं जी सोहेल ॾिसो, हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त मुश्ताक, इहो ख़बर न आहे त असांजी पार्टीज़ जेके पॉलिटिकल स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशन में इंडिविजुअल वेहनि था, ऐं असां वटि अनफॉर्चुनेटली ईअं रहियो आहे त इंस्टीट्यूशन्स लॉज़ खे जेको सो घटि फॉलो कंदा आहिनि. पोइ जेका इंडिविजुअल जी विल हूंदी आहे, चाहे पोइ को प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट हुजे, फेडरल इंस्टीट्यूट हुजे, या इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कोर्ट्स ऑल्सो. तव्हां ॾिसंदा हूंदव त कंहिं ज़माने में कोर्ट्स जेके आहिनि उहे तमामु एक्टिव थी वेंदियूं आहिनि, कंहिं ज़माने में बिल्कुलु बि जेको आहे सो अखियूं बंदि करे वेही रहंदा आहिनि. पर जेकॾहिं ॻाल्हि कजे पॉलिटिकल फोर्सिस जी, पॉलिटिकल पार्टीज़ जी, त सिंध में जेका पॉलिटिकल पार्टी लीड करे थी उन्हनि खे इहो ख़्यालु छो नथो अचे त हाउ दिस विल गो डाउन द लाइन इन हिस्ट्री. छा उन्हनि खे लॻे थो त ही जेतिरा लॉ जेको आहे सो मोल्ड करे ऐं जेतिरा लॉस खे चेंज करे ऐं एपरेंटली इहे सभु शयूं डॉक्यूमेंट बि थियनि थियूं, उन खां पोइ ही ॿाहिरि वञी करे उन्हनि खे फेवर ॾियनि था ऐं इन्हनि खे बहरिया टाउन खे ऐं DHA सिटी खे फैसिलिटेट कनि था, त उहे माण्हुनि जी जेको सो ॻोठनि जा ॻोठ तबाह कनि. उन खां पोइ बजट उन्हनि खे ॾियनि था त हू वॾा रोड ठाहिनि उते अंदरि. त छा इन्हनि खे फील नथो थिए, महसूसु नथो थिए त इहा शइ हिस्ट्री में हिन जी का अकाउंटेबिलिटी कॾहिं थींदी? इहे सभु शयूं जेके आहिनि वरी अची हुननि जे साम्हूं बीहंदियूं. मूंखे नथो लॻे त इहा एतिरी शॉर्ट साइटेड अप्रोच कंहिं बि पार्टी जी, कंहिं बि पॉलिटिकल हुनजी हुजणु घुरिजे. त आई डोंट नो कि फाइनेंशियल इंट्रेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट के केतिरनि अरबन जो फाइनेंशियल इंट्रेस्ट आहे, पर हिकिड़ी ॻाल्हि त ॾिसणु घुरिजे त पॉलिटिकल स्ट्रगल केतिरी आहे, नालो छा आहे जेको तव्हां यूज़ था कयो, स्ट्रगल कहिड़ी आहे जेका तव्हां यूज़ था कयो, उनजे पोयां कहिड़ा कहिड़ा माण्हू आहिनि जिन पंहिंजूं जानियूं ॾिनियूं आहिनि, जिन जी पॉलिटिकल सालनि जी जेको आहे सो ॾहाकनि जी स्ट्रगल आहे, उनखे तव्हां वठी अची इन लेवल ते बीहारियो आहे जिते हाणे इहो कॉन्सेंसस आहे.
इहो को सिर्फ़ु ईअं न आहे त को ही इल्ज़ाम कंहिं हिकिड़ी एक्सट्रीमिस्ट या हिकिड़ी एक्सट्रीम पोलराइज़ क़िस्म जी पार्टी जे तरफ़ां अचे थो, न ही त कॉन्सेंसस आहे मीडिया में, राइटर्स में, एक्टिविस्ट में ऐं सिविल सोसाइटी में त जेका सिंध गवर्नमेंट आहे, जेका सिंध में रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी आहे, उन्हनि हिन बैरिया टाउन जे मसइले में जेको किरदारु अदा कयो आहे उहो शर्मनाक किरदारु आहे, जेको हींअर नज़िया बि असां सां शेयर कयो त उन्हनि लॉस चेंज कया, हुननि पुलिस जेका आहे उन्हनि जे डिस्पोज़ल ते छॾे ॾिनी त जीअं प्राइवेट मिलिशिया वांगुरु पुलिस खे जंहिं महिल कॉल कनि उहा हुननि जे बुलडोज़रनि सां गॾु पुलिस जा मोबाइल्स अचनि था। उनखां पोइ MDA खे हुननि चयो त मलीर में, कराची में मलीर जे अंदरि तव्हांखे रोड रस्ता कोन मिलंदा, न उते पाणी जी सप्लाई थींदी, पर बैरिया टाउन जे लाइ वॾा रोड रस्ता बि ठहंदा, उन्हनि जे लाइ पाणी जूं लाइनूं बि विछायूं वेंदियूं। मतिलबु त सिंध गवर्नमेंट खे 4 करोड़ जेके सूबे में माण्हू आहिनि उहे नज़र कोन था अचनि, सिंध जा ॻोठ नज़र कोन था अचनि, सिंध जा शहर नज़र कोन था अचनि। को हिकिड़ो नंढो शहर, का हिकिड़ी नंढी UC पूरे प्रोविंस में अहिड़ी न आहे जंहिं ते प्रोविंशियल गवर्नमेंट बीह करे प्राउडली चई सघे त दिस इज़ द मॉडल दैट वी हैव क्रिएटेड इन लास्ट 10-15 years। बट हिननि खे शर्म कोन थो अचे त ही एतिरा वॾा मेगा प्रोजेक्ट जेके आहिनि उन्हनि खे सॼा पंहिंजा रिसोर्सिस बि ॾियनि था, सॼी मशीनरी ॾियनि था, पोइ उहे इलीट क्लास जे लाइ या त इहो ॿुधाइनि त ही जेको आहे सो सॼो सिस्टम इलीट जे लाइ आहे, हिते जेको आम माण्हू हाँ आहे गॾो उन गॾु जे लाइ मतिलबु शहज़ाद इहे ॻाल्हि आहे न, यानी छा सवाल पीपल्स पार्टी जे नासिर शाह खां, मुराद अली शाह खां, यूने बिलावल भुट्टे साहब खां पुछा कजे, छा जेका पिंडी में इस्लामाबाद में जेका बैरिया टाउन आहे उन जे अंदरि रोड रस्ता उतां जी हुकूमत ठाराया आहिनि? छा जेका लाहौर में बैरिया टाउन आहे उन जा जेके रोड रस्ता जेके आहिनि उहे उतां जी हुकूमत ठाराया आहिनि? त पोइ ही कहिड़ो सिंध जे माण्हू सां तव्हां ज़ुल्म पिया कयो जो बैरिया टाउन हिकिड़ी प्राइवेट कंपनी आहे, उन में तव्हां चओ था 8 अरब रुपया जा रोड जेके आहिनि सिंध गवर्नमेंट ठाराया आहिनि, यानी ठाराया बैरिया आहिनि, बिल सिंध गवर्नमेंट खे न वियो आहे। यानी असांजे अखियुनि में तव्हां एॾी धूड़ कीअं था विझी सघो? मुश्ताक साईं ऐं शहज़ाद साईं, आई थिंक ॿियो जेको बुनियादी सवाल जेको पुछणु घुरिजे उहो इहो आहे त डेवलपमेंट या तरक़ी छो ऐं छा लाइ? ठीकु आहे न, स्टेक होल्डर तव्हांजो केरु आहे, तव्हां कंहिंजे इंट्रस्ट में कमु करे रहिया आहियो। त इहो बिल्कुलु सही जीअं शहज़ाद चयो त भई छा सिंध जी गवर्नमेंट ऐं सिंध असेंबली ऐं उन जा जेके अवामी रिप्रेज़ेंटेटिव आहिनि उन्हनि खे इहो सुवाल पुछण जी ज़रूरत आहे त भाई तव्हां हिते इन्हनि जायुनि ते वेठा आहियो, कंहिंजी इंट्रस्ट लाइ वेठा आहियो? सो आई थिंक उहो हुननि इंतिहाई हिकिड़ो शर्मनाक माहौल आहे जंहिंमें हू न को आवाज़ उथारनि था, न को कमु कनि था। भई ठीकु आहे, ही डेवलपमेंट स्कीम न हुजे का तव्हां ॿी ॾियो, राइट, ऑप्शंस ॾियो, तव्हां अवाम जे इंट्रस्ट में का त शइ ॻाल्हायो, का त के त बिल पेश कयो, के त शयूं तव्हां ॾियो। न, अलाए कहिड़े कम में हू मसरूफ़ आहिनि, इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। ऐं हिननि इशूज़ ते हिननि डेवलपमेंट बिल्कुलु थियणु घुरिजे, पर उहा कहिड़े इंट्रस्ट में आहे, उन जो स्टेक होल्डर केरु आहे। ॿी ॻाल्हि की दुनिया भर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थियनि था, इहे शयूं थियनि थियूं, जॾहिं तव्हां कंहिं बि प्राइवेट कंपनी या कंहिं बि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सां तव्हां एग्रीमेंट कयो था त उन में तव्हां इहे शयूं ॾिसंदो त भई उहे जेके इन्वेस्टमेंट आणीनि था उन्हनि जी ऑब्लिगेशन्स छा आहिनि, उन में जेको तव्हांजो आम अवामी माण्हू आहे, जेको उते जो ॻोठाणो आहे, उनखे कीअं रिहेबिलिटेशन थींदी, उन्हनि जा मसइला कीअं हल थींदा, उन में तव्हां एम्प्लॉयमेंट केॾी क्रिएट कंदा, उन्हनि खे तव्हां कीअं अकामोडेट कंदा, उहो को बि हिसाब किताब न आहे हिते। उहो को बि उहो इंट्रस्ट, हाणे उहो इंट्रस्ट पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेटिव जो कमु आहे कि उहो रखे। ऐं हिते असीं उहा शइ इंतिहाई हिकिड़ी अफ़सोसनाक हालत आहे कि उहो जेको पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेटिव आहे, उहा जेका असांजी गवर्नमेंट आहे, जेके असीं चऊं था कि उहा असांजी पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेशन आहे, उहा इन इंट्रस्ट खे बिल्कुलु फेल करे चुकी आहे, उनखे नथी रखे साम्हूं। त अगरि इहे एग्रीमेंट बिल्कुलु असीं जेको बि इन्वेस्टर हुजे, प्राइवेट ई इन्वेस्टमेंट थियनि थियूं, उहा सुठी ॻाल्हि आहे, उनखे इनकरेज कयूं था, पर उन में तव्हां अवाम पंहिंजे ॻोठनि उते जे माण्हुनि जिते उहा थी रही आहे उनजे इंट्रस्ट खे त आम्हूं साम्हूं रखो न, उनजे लाइ तव्हांजो कमु आहे, उन इहो ई त कमु आहे, इन जे करे त असीं तव्हांखे सिंध असेंबली में मोकिलियूं था। And when you fail to do that, I'm sorry, this is the devastation that we are facing.
So there has to be checks and balances. ऐं उहा पार्टी पई करे जंहिंजो फाउंडर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जंहिं शहादत क़बूल कई, जंहिं फांसी क़बूल कई, ऐं उन जे अगेंस्ट हाणे जेके वेठा आहिनि पीपल्स पार्टी जा मालिक बणियो, उन्हनि खे बिलावल हाउस खपे बहरिया टाउन में, लाहौर में बहरिया टाउन जो जहाज़ खपे जेके इलेक्शन कैंपेन जे लाइ. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज हू त ब्राइब करे पियो, राइट. हू जेकी मलिक रियाज़ ऐं उनजी जेका ऑर्गेनाइज़ेशन आहे, हर कंहिंखे ब्राइब पई करे. हू त रखियो वेठो आहे, ओपन चेक बुक खोलियो वेठो आहे. त हू त पंहिंजी शातिर ख़ातिर हू पॉलिटिशियंस खे बाहि पियो करे, हू जनरल्स खे बाहि पियो करे, हू फ़ौज जी उनखे पाण सां खणी पियो हले. हू त पंहिंजे इंट्रस्ट में. हाणे असांखे पुछणो आहे पंहिंजे रिप्रेज़ेंटेशन खां, तव्हां पंहिंजे इंट्रस्ट में छा कयो हिन सॼी प्रोसेस में. बिल्कुलु हू पंहिंजो इंट्रस्ट में न आहे चुका आहिनि. ऐं मुंहिंजे ख़्याल में हिन में शहज़ाद हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि करे वठां त हिन सॼे असांजे कैंपेन खे असां ईअं बि न ॾिसूं की को असांजो जेको आहे चिटो पतो आहे सिंध गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ु या पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु. असीं सम्झूं था पीपल्स पार्टी अवाम जो पार्टनर आहे, हुननि खे अवाम जो पार्टनर थी करे बीहणु घुरिजे. असीं चाहियूं था कि सिंध गवर्नमेंट ऐं पीपल्स पार्टी सिंध में परफॉर्म करे, ऐं असीं चाहियूं था त ही असांजी जिदोजहद में शामिल थियनि ऐं हिन खे अवामी इंट्रस्ट में बहितर बनाइनि. मां शहज़ाद तव्हां खां हिकिड़ो सुवाल पुछां, मतिलबु तव्हां कुझु कमेंट बि करण पिया चाहियो. माण्हू बार बार पुछनि था त भई पोइ आख़िर असांजो मौक़िफ़, असांजो पॉइंट ऑफ व्यू छा आहे. लाइक हाणे जॾहिं बहरिया टाउन ठही वियो आहे ऐं जेको बि उते मौजूदु आहे, त आख़िर असांजो सॉलिड ॿिनि टिनि नुक़्तनि में जेकॾहिं बयानु कजे त असांजो पॉइंट ऑफ व्यू छा आहे. वॉट आर आवर डिमांड्स नाउ. ॾिसो, ॿिनि तरह जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़िस्ट करे थो हिन पूरे सिचुएशन में, जंहिंखे आउं एक्सप्लेन कंदुमि जेको मूं ऑब्ज़र्व कयो आहे. हिकु त आहे जेको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल कॉन्सेंसस जेको हाणे बिल्ड थियो आहे सिंध जे अंदरि आफ्टर सो मेनी इयर्स. उन जो चवणु इहो आहे त हीउ पूरे जो पूरो जेको प्रोजेक्ट आहे इहो लॉ खे जेको आहे सो बिल्कुलु उनखे साइड ते रखे करे ठाहियो वियो आहे, जंहिंमें बिल्कुलु करप्शन कई वई आहे ऐं लॉस खे वायोलेट कयो वियो आहे. तंहिंजे करे इहो प्रोजेक्ट खे सिंध जो अवाम जेको आहे, जेका उतां जा स्पेसिफिकली जेके ॻोठाणा या ॻोठ जेके मुतासिर थिया आहिनि, उहे रिजेक्ट था कनि हिनखे. ऐं जेके जीअं नज़ीहा ॻाल्हि कई पहिरियां, त जेको पहिरियों सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आयो हुयो, उहो फ़ैसिलो इहो ई हुयो त ही सॼे जूं सॼियूं ट्रांज़ेक्शन्स जेके आहिनि नल एंड वॉइड आहिनि, इहे लॉ जे अगेंस्ट आहिनि. त उहो मौक़िफ़ हिकिड़ो पॉलिटिकल मौक़िफ़ आहे जेको मां सम्झां थो बिल्कुलु सही मौक़िफ़ आहे. हाणे छा इहे सभु जेके घर ठही चुका आहिनि, जेका बहरिया जी इन्वेस्टमेंट थी चुकी आहे, या छा इन जो छा थींदो पोइ, छा इहा रिवर्स थींदी, ऐं सुप्रीम कोर्ट जो पहिरियों जेको फ़ैसिलो आहे उहो इम्प्लीमेंट थींदो या न थींदो, उहे प्रैक्टिकल सिचुएशन्स आहिनि. व्हेन इट कम्स टू लॉ, जॾहिं सुप्रीम कोर्ट तव्हांजी जेका सुपीरियर अथॉरिटी आहे मुल्क जी, लॉ खे डिफाइन करण जी, इंटरप्रेट करण जी, जॾहिं उन्हनि चयो आहे त इहो नल एंड वॉइड आहे, त इट स्टैंड्स नल एंड वॉइड. पोइ हाणे हिस्ट्री में जेको बि थिए उन जे बारे में जेकॾहिं स्टेट पंहिंजी रिट क़ाइमु करणु चाहे थी, जेकर लॉ जो मक़सदु आहे त लॉ सभिनी जे लाइ बराबरि आहे, त पोइ उहो थियणु घुरिजे इम्प्लीमेंट. उहो अलॻि क्वेश्चन आहे त उहो थींदो या न थींदो. दैट इज़ फॉर द स्टेट एंड देयर मशीनरी टू डिसाइड. ॿियो जेको कॉन्सेंसस आहे उहो इहो आहे त ठीकु आहे, जेको सेकेंड फ़ैसिलो थियो सुप्रीम कोर्ट जो, जंहिंमें उन्हनि चयो त 16,000 एकड़्स खां वधीक हिकिड़ो इंच बि जेको आहे सो सिंध गवर्नमेंट बहरिया टाउन खे न ॾिए, ऐं 16,000 जे अगेंस्ट बहरिया टाउन हेतिरा पैसा जमा कराए सुप्रीम कोर्ट जे अकाउंट में. देन इट इज़ बिटवीन सुप्रीम कोर्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट टू डिस्कस एंड डिसाइड हाउ दोज़ फंड्स वुड बी यूटिलाइज़. त ॿियो कॉन्सेंसस इहो आहे, ॿी जेको ॻाल्हि इहा आहे त उहो 16,000 खां वधीक हाणे जेको थी चुको आहे उहो छो थियो आहे. हाणे क्वेश्चन अगेन इहो थो अचे त छा भला सुप्रीम कोर्ट, छा भला फेडरल गवर्नमेंट, छा पाकिस्तान जो को बि लॉ एनफोर्समेंट जो इदारो हिन सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे, जेको सेकेंड फाइनल फ़ैसिलो आहे, जेको इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो फ़ैसिलो आहे, उनखे इम्प्लीमेंट कराईंदो या न कराईंदो. ही ॾिसो, हिकिड़ो वॾो इशू इहो आहे त स्टेट ऐं अवाम जो रिश्तो जेको हूंदो आहे, जेके लॉज जी रिस्पेक्ट थींदी आहे, उहो हिकिड़ो कॉन्ट्रैक्ट आहे. उहो कॉन्ट्रैक्ट इहो आहे त ही लॉज आहिनि, इन्हनि खे असां स्टेट बि एबाइड कंदी ऐं अवाम बि जेको आहे सो विल एबाइड बाय द लॉ. हाणे स्टेट जो हिकिड़ो ऑर्डर पास थियल आहे सुप्रीम कोर्ट जो, उन जी इम्प्लीमेंटेशन कोन थी थिए, उन सां हिकिड़ी प्राइवेट कंपनी जेका आहे कंप्लाई नथी करे, ऐं उन जे ख़िलाफ़ केरु कुझु बि नथो करे सघे स्टेट जे अंदरि, इट सीम्स. हाणे इहो कहिड़ो मैसेज वञे थो पाकिस्तान जे 12 करोड़ अवाम ॾे? इहो मैसेज कहिड़ो थो वञे? इहो मैसेज इहो थो वञे त जेको पावरफुल आहे उन जे लाइ लॉ एग्ज़िस्ट ई नथो करे.
जेकॾहिं तव्हां वटि पावर आहे, जेको बहरिया टाउन जो जेको मालिक आहे, मलिक रियाज़, उहो त वेही टीवी ते चवंदो आहे त मां सभिनी खे पैसा ॾिना आहिनि, किकबैक्स जी उहो खुले आम ॻाल्हि कंदो आहे। त इन जो मक़सदु आहे त छा स्टेट इहो मैसेज ॾिए थी सभिनी पाकिस्तानियुनि खे त छा जेकॾहिं तव्हांजा पॉकेट्स जेको सो डीप आहिनि एज़ पर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जे, त पोइ तव्हां लॉ खे ख़रीद करे सघो था, पोइ तव्हां सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर खे बि खणी करे रदी जी टोकरी में उछलाए सघो था, तव्हांखे जेको वणे तव्हां क्रेन ते चढ़ो ऐं पोइ जिते तव्हांजी दिलि चवे उते तव्हां कब्ज़ो कयो। त इहे तमामु वॾा क्वेश्चन आहिनि स्टेट इंस्टीट्यूशन्स ते, पूरो जेको सोशल कॉन्ट्रैक्ट आहे पाकिस्तान जे अंदरि उन ते। इट्स नॉट अबाउट वन project or one scheme, it's about the implementation of the law of the land is the law of the land for everyone, so it has to be implemented. फंडामेंटली जेको सुभाणे जेको मुतालबो बीहंदो हिकिड़ो त इहो बीहंदो त भई जेको फ़ैसिलो आहे सुप्रीम कोर्ट जो 2018 जो उन ते अमल कयो वञे। दैट इज़ द वन की डिमांड फॉर टुमारोज़ प्रोटेस्ट, राइट? पहिरियों फ़ैसिलो पॉलिटिकल डिमांड सिंधियुनि जी इहा आहे, सिंध जे अवाम जी, कराची जे अवाम जी इहा आहे त पहिरियों फ़ैसिलो जेको आहे उहो इम्प्लीमेंट कयो वञे। उन खां पोइ ट्रांसपेरेंसी जो बि डिमांड आहे त ॿुधायो वञे त केतिरी ज़मीन आख़िर बहरिया टाउन वटि आहे। टियों क्वेश्चन इहो आहे त छा बहरिया टाउन जेतिरी ज़मीन सेल कई आहे हींअर ताईं, जेतिरा कॉन्ट्रैक्ट हुननि खपाया आहिनि प्लॉट्स जा, छा उन्हनि वटि टाइटल डीड्स आहिनि ओतिरियूं, छा ओतिरी ज़मीन ओन करे थी, प्रॉपर्टी कीअं था खपाइनि जेकॾहिं जी ओनरशिप में न आहे। उन खां पोइ ॿिया क्वेश्चन्स इहे आहिनि त जेके ॻोठ तबाह कया विया आहिनि, जेके उते माण्हू रिहाइशी हुया एतिरनि सालनि खां, जिन वटि लीज़िस हुयूं, उहे जेके ॻोठ तबाह कया विया आहिनि उन्हनि जो रिकॉर्ड्स छा आहे, उन्हनि खे छा सिंध गवर्नमेंट ॾींदी, उन्हनि खे छा फेडरल गवर्नमेंट ॾींदी, उनखे स्टेट छा ॾींदी। त देर आर सो मेनी क्वेश्चन्स अराउंड इट, ऐं उहे डिमांड्स सिंध एक्शन कमेटी जेके आहिनि से पंहिंजे सुभाणे जे धरणे में ऑब्वियसली अनाउंस कंदी ऐं अवाम जे साम्हूं ईंदा त कहिड़ा आहिनि। इहे कुझु नुक़्ता आहिनि जेके मां सम्झां त तमामु अहम आहिनि। बिल्कुलु सुहेल, पाण पोस्ट बि कयो आहे त वी सपोर्ट टुमारोज़ प्रोटेस्ट, राइट? ऐं तव्हां हुन में कुझु चवणु चाहींदा? No, I think Shahzad put it well. Mushtaq Sain, you put it well. And today's conversation with Naziha was again a continuation of our effort to bring voice to this very important issue, and we'll continue to do that. We'll continue to press upon this issue. We are um, love to hear from Sindh government and People's Party representation if they are willing to come out and speak. In addition to that, to again, I would say to further show our solidarity for tomorrow's protest. I think this time army pressure na vadando chuje. It all comes down to a political representation and conscious political element in the society to raise. So the development of tomorrow is socially conscious development. Development of tomorrow is environmentally conscious development. Yeah. यही से असां उम्मीद रखूं था इन ॻाल्हि जे लाइ असांजो स्ट्रगल बिल्कुलु जारी आहे। बिल्कुलु, आई थिंक ऐं हिन दफ़े इंट्रस्टिंग ॻाल्हि इहा थी आहे, ऐं भली ॻाल्हि इहा थी आहे जो जेका सिंध जी सिविल सोसाइटी आहे, मां ॾिठूं पे फेसबुक ते पोस्टिंग, उहो जामी चांडियो हुजे, साईं मुश्ताक मीरानी हुजे, जावेद काज़ी हुजे, सभिनि दोस्तनि जो जेको आहे उहे उनजी सपोर्ट कनि पिया, उनजी हिमायत कनि पिया। शायदि हिकु ॿ पॉलिटिकल पार्टी जो इशू हुयो, ख़ासि तौर ते मूं वीडियो मैसेज पढ़ियो अयाज़ लतीफ़ पलीजे जो, उनजो ख़्यालु हो त उनखे दावत कोन ॾिनी वई आहे, पर उनजी हिमायत कई आहे, विच वी वेलकम, यू नो, ऑब्वियसली, छाकाणि त उहो हिसो न हुयो सिंध एक्शन कमेटी जो, उनजे करे। पर इट्स गुड के हिन मौक़े ते असां सभिनी खे यूनिटी जो, ॿधी जो, एके जो मुज़ाहिरो करणु खपे। ऐं मां उमीद थो करियां त सुभाणे जेको आहे सो हज़ारे लखे माण्हू जेके आहिनि सिंध जा माण्हू ॿाहिरि ईंदा, बिकॉज़ इहो ई तरीक़ो आहे, जेसिताईं मज़ामत न कबी, रेज़िस्टेंस न कबी, माण्हू सुजाग न थींदा त कमु कोन थींदो। ऐं असां तव्हांखे दोस्तो इहो ॿुधायूं त सुभाणे हिते न्यूयॉर्क में जेके आहिनि जिस्कम जा, SUP जा ऐं सिंध यूनाइटेड पार्टी जा जेके दोस्त आहिनि उहे प्रोटेस्ट करे रहिया आहिनि। ह्यूस्टन में जेका असांजी सिंधी कम्यूनिटी आहे उहे प्रोटेस्ट करे रहिया आहिनि। उन्हनि सां गॾु उते वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जा एक्टिविस्ट बि शामिल हूंदा। लंडन में बि वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ऐं जेके सिंधी माण्हू आहिनि उहे प्रोटेस्ट करे रहिया आहिनि इन सॉलिडरिटी विद द पीपल ऑफ सिंध in their protest against Bahria town's occupation of our land. So असीं तव्हां सां गॾु आहियूं, दिलि सां, दिमाग़ सां, रूह सां जाॻंदासीं देर ताईं,
विल फॉलो कि छा पियो थिए, प्रोटेस्ट कीअं पियो थिए, ऐं आई होप कि इट विल बी पीसफुल, ऐं पुलिस जेका आहे रियासत जी भंगार न वहंदी, ऐं को तशदुद कोन थींदो, ऐं बहरिया टाउन जा जेके प्राइवेट मलेशिया जीअं तरह जी ऑपरेट थी करे उहा माण्हुनि खे तंग न कंदी, ऐं माण्हुनि खे पूरो हक़ु हूंदो त हू पंहिंजो पुरअमन जमहूरी जेको एहतजाजी आवाज़ आहे उहो पेश कनि. सो आई थैंक यू एज ऑलवेज डियर सुहेल एंड शहजाद. I thank you very Thank much for you. joining us today. Yeah, take Thank care. you. Nice. Thank you, Yeah. Mushtaq. Bye.